Good morning, students. Now, again, we are going to start with the chapter of biology, that is, how do organisms reproduce. It is the 8th chapter of biology, and today we are going to start with the introduction of the chapter. Now, in this chapter, first of all, what is the importance of reproduction? So, reproduction, living organisms produce new individual of their own kind and maintains their existence generation after generation. This process is known as reproduction. So, maintaining our own kind in any species is defined as reproduction, or it may be also defined as production of new generation of individuals of the same species that are physically independent of their parents. Now, what is the need of reproduction? Why do organisms reproduce? Number one, for the continuation of life on the earth, to maintain the size of the population and the transfer of variation from one generation to another. Now, how the variations are important? Variation are the changes. See, we are similar to our parents, but we are not the identical copy of our parents. So, that is due to the variation. How variations are generated? That is with the help of DNA. The DNA, when it passes its copy, it unwinds itself before passing its copy, and in the new cell, it forms a complementary strand again itself, in which the new protein and new information is being generated, in which the characters similar to the parents are being developed, but not the exact copy of the parents are being developed, right? So, that I will tell you in detail, I will tell you in further topics. So, let us continue further. Now, reproduction basic steps, that is being told here. What are the basic steps in reproduction? So, in this, DNA in the cell nucleus in the information is the information center for making the protein. What is DNA? DNA full form you have studied in class 9, deoxyribonucleic acid. So, see, this is the DNA replication form. The DNA is a double helical structure. जैसे दो रस्से रोप की तरह आपस में दोनों को बांध दिया हो, और जब उनको अलग, जब सेल डिवाइड होती है तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो डीएनए भी डिवाइड होता है, और जब डीएनए डिवाइड होता है तो ये जो इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये अनविंड हो जाते हैं, ठीक है. सो यू कैन सी दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस. Now, the first step in reproduction is replication of DNA followed by cell division. So, cell division होती है in which the DNA replicates or it divides, ठीक है. And variations happen during copying of DNA. So, variation होती है changes जो आ रहे हैं, characters में जो changes आ रहे हैं, that is formation of the new protein, and new protein is formed by the new setup of the DNA. So, how it is being formed? He is saying when the DNA setup is formed in the new cell. So, these variation, अब क्या होगा जब ये अनविंड होगा, जब सेल डिवाइड हुई, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो उसके अंदर जो डीएनए है वो भी डिवाइड हुआ, डीएनए डिवाइड हुआ तो ये दो अलग अलग सेल्स में गया अनविंड होके. अनविंड होने के बाद अब जब ये नई सेल में गया तो ये सिंगल स्ट्रैंड गया, और इसके अगेंस्ट जो दूसरा स्ट्रैंड बना कॉम्प्लीमेंट्री वो अपने आप बना, और जब वो दूसरा बना तो उसके अंदर जो सेटअप बना होगा, इनके बीच में स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए which is a double helical structure. So it form, ये अपना जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अपने साथ बनाता है, उसमें जो नए सेटअप बनते हैं, जैसे सीढ़ी में स्टेप्स होती हैं, ऐसे ही डीएनए में स्टेप्स होते हैं, बीच बीच में कोडोन्स होते हैं, उन पे जो अपना नया सेटअप बनता है, नए सेटअप में नए प्रोटीन बनते हैं, और नए प्रोटीन से नए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, और उनसे चेंजेस आते हैं विच आर नोन एज वेरिएशंस. So variation happen during the copying of DNA.
सो दीज वेरिएशन आर द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। और यही कारण है कि हर स्टेप पे जब चेंजेस आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस जो आ रहे हैं, that leads to evolution. So evolution is a process in which the most ancient to the most recent one, the step by step जो gradual changes आ रहे हैं from most ancient to the most recent one, that changes which lead to the adaptation of the organism to live in that environment, those that phenomena, that process is known as evolution. Variation are useful for the survival of species over time. अब अगर वेरिएशन ना हो तो क्या होगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर सारे सेम हो जाएंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश अमंग ईच अदर। सो दीज वेरिएशन आर हेल्पफुल टू अस, दीज वेरिएशन आर वेरी हेल्पफुल टू अस। वी आर इंडिविजुअली एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्या है, अलग है इन अपीयरेंस, सो एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो. So if we would have been copy of each other, that would have created so much of difficulty in the on the earth for the survival of all of us, right? So these variation are very helpful for us, right? Now continuing further, importance of DNA copying in reproduction. Now DNA copying, organism, he is saying, organism pass on their characters to their offsprings. अब डीएनए में कॉपिंग में ऑर्गेनिज्म करेक्टर्स तो पास करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, ये ऐसा नहीं है कि करेक्टरिस्टिक पास नहीं होती हैं, दे पास ऑन द करेक्टरिस्टिक, ठीक है। हमारी आदतें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, सो करेक्टरिस्टिक तो पास ऑन होती हैं, बट हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते हैं, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंस क्या है डीएनए कॉपिंग की, लेट अस रीड फर्दर. So first of all, it maintains characteristics in different generation. DNA is the blueprint and is ensure correct body design. Body design हमारा सेम है, यानी कि pair of eyes, a nose, a mouth, pair of ears, ठीक है ना। तो हमारा body design क्या है, सेम है. Any change in these causes change in the synthesis of protein and in turn body design and it will cause variation, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर मान लो थोड़ा बहुत भी अगर कोई वेरिएशन आती है, ठीक है, तो उससे उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. वन एग्जाम्पल इज ऑल्सो शोन इन द फिगर, यू कैन सी दैट इन द फिगर. ओके.